Good morning, students. So, I hope all you are well and fine, and I hope also that you have seen my last video lecture that is for Elegy written in a country churchyard. First part. That part was for introduction of the poem as well as for introduction of the poet. The first part I have clarified that life of the poet and also introduction of the poem. For what purpose he has written that poem and what was his ambition and what was his idea to write the poem. So that things we have discussed, and today we are going to discuss about the summary of the poem. This is second part of this lesson or of this poem, and this is especially for the students are studying in Rajasthan University BA second year. Okay, so BA second year, those who are studying in different colleges and. Under the Rajasthan University, so this is for BA second year and BA second year, those who are studying in English literature. So, let's begin of the summary. Then third part will be analyze of this chapter and some important question answer. So, let's begin. Summary of the poem. The poem focus on the ordinary village people who lie buried in the country churchyard and whose humble graves are contrasted with the tombs of cathedral and the lives of those who have borne them and honor. So, in this poem, we can see that the poem here he describes about the common people and about the ordinary people, those who have light, those who have slept under the soil, under the ground, and those who are buried also under the soil. Especially in India, when somebody dies, or we may take him to cemetery and we will have burning of his dead body. That is the culture of India. But especially in Christians, Muslims, and some other religion people, they are not burning the dead body, but they are, lying that under the ground, or they buried them, and they made a tomb also, especially the Christian people backside of the church. Okay, there is a place of cemetery, and where the people usually buried there. And here the point says about a cathedral. Okay, so what is cathedral? Cathedral is it is one kind of big church. Okay, under the cathedral there are other churches also. Especially in cathedral, there is a head of bishop, and some other churches under the cathedral, the fathers are the head. So I'm not going to tell you about the religion, but just I want to make you understand about that. So before the ending of this lesson, I would like to tell you, if yet you haven't subscribed my channel, please subscribe, that you can get my new videos notification fastly. And it is true that I am working hard for you, and that's the reason you can make or you can be a subscriber of me also. So students, मैं आज आप लोग के सामने इस पॉइंट को रखने के लिए चाहता हूँ,
जो पोएम का नाम है एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वह हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, और पोएट का जन्म के बारे में, पोएट का मृत्यु के बारे में, और साथ ही साथ पोएट ने किस बात को लेकर किस पोएम को लिखा है, किसको स्मरण कर किस बात को लिखा है ना, ये सब बारे में पढ़ने के साथ साथ हम पोएम का भी इंट्रोडक्शन को देखा, पोएम का भी परिचय को देखा कि ये पोएम किस संदर्भ में लिखता है। तो आज हम इसका समरी को देखेंगे, और उसके बाद जैसे ये समरी पूरा हो जाएगा उसके बाद उसका थर्ड पार्ट होगा। उस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे उसका एनालाइज, और साथ ही साथ कुछ कुछ एनालाइज भी है, और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट हमें जो ग्रामीण लोगों के बारे में बताता है, जो ग्रामीण लोग जो सामान्य जीवन जिया करते थे और जिनका जीवन शैली जो बहुत छोटा था, ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनको कोई नहीं जानता था, जिनको कोई नहीं पहचानता था, उनके बारे में बताते हैं। खास करके वो देखते हैं चर्चयार्ड को। ओके, चर्चयार्ड का मतलब है चर्च का जो एरिया होता है, जैसे कि हम ये डीसीएस कैंपस कहते हैं, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है, ठीक है, जैसे कि हम कोई कॉलेज में पढ़ते तो वहाँ का कैंपस होता है, ठीक है, वैसे चर्च का भी एक एरिया होता है जिसको चर्चयार्ड कहा जाता है। और वो चर्च के जो बिल्कुल पीछे की साइड में क्या होता है कि कब्रिस्तान होता है, और जहाँ पे जो लोग मर जाते हैं उनको वहाँ पे गाड़ा जाता है। अगर भारत के कल्चर का हम देखें तो मरे हुए लोगों को हम जला देते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर के आधार पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं या ज्यूस है, ऐसे और भी कई रिलीजियस के लोग होते हैं, वो क्या नहीं करते, वो किसी भी तरह से मतलब सबको जलाते नहीं बल्कि उसको गाड़ देते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है बड़े बड़े टूम्स को देखते हैं, यानी इनके ये जिस ग्रेव में रह गए, ये जहाँ जिस धरती के नीचे रह गया, अब वहाँ पे क्या बन गया, एक ट्यूब बन गया। और ये कैथेड्रल के बिल्कुल पीछे की तरफ की बातें कहा जाता है। ये बड़े नम्र लोग थे और बड़े ईमानदार लोग थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो जमीन के नीचे दब चुके हैं, अब वो जमीन के नीचे सो चुके हैं। तो कैथेड्रल शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कैथेड्रल का क्या अर्थ हो सकता है? कैथेड्रल का अर्थ होता है जैसे एक बड़ा चर्च है, मतलब उस चर्च के अंदर में और कई चर्च होंगे। कैथेड्रल में बिशप हेड होता है, और उसके अंदर में और भी कई चर्च होता है जिसपे फादर हेड होता है। तो कई फादरों का हेड के रूप में एक बिशप होता है, और कई बिशप का हेड के ऊपर एक आर्च बिशप रहता है, और कई मतलब पूरे जितने फादर, बिशप, आर्च बिशप, जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के मतलब लीडर्स है, उनसे सबसे बड़े माने जाते हैं पोप। तो जहाँ पे बिशप और आर्च बिशप रहते हैं, ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? कैथेड्रल कहा जाता है। ऐसे जो चर्च को बिशप के द्वारा या आर्च बिशप के द्वारा संचालित किया जाता है, उसी चर्च को कैथेड्रल कहा जाता है। तो ऐसे कैथेड्रल के बिल्कुल पीछे ही ये लोग अभी कौन से पोजीशन में है? सोए हुए पोजीशन में है। द कर्फ्यू बेल प्रोक्लेम्स the end of the day and the approach of the evening. According to the midwell regulation, fire must be put out at a fixed hour in the evening, and the curfew bell serves as a warning to the villagers. It is the time when cattle farmers and the villagers who go out of village for their day work return to their homes. The poet alone remained in the churchyard in the growing darkness of the evening. The whole atmosphere is fearful, sad, serious, and calm. The silence of the atmosphere is occasionally disturbed by the droning flights of the beetles, the tinkling of the ship bell, and the hooting of the owls. So here the poet says that there is a curfew bell. Curfew bell means it is such kind of bell
that where especially that is on the church. Okay, that is especially on the church. This is called church bell. Especially, I have experience because in my village there is a big church, and especially the church bell rang morning 6 o'clock and 12 o'clock as well as in the evening also. That means morning time the bell is saying that wake up and do your all work and go to your work. And as for it is especially afternoon time, sharp 12 o'clock, that means there should be little bit rest for the people, those who are working, that this is time for taking food or etc. And especially in the evening time, in 6 o'clock, the curfew bell also rings. And when the curfew bell rings, the people, those who have gone to their occupation, those who have gone to their fields and farms, and people are doing different kinds of work, and there is a time for coming to their home. Okay, when the curfew bell rings. Okay, so that is why he says here the curfew bell ring, or especially the medieval age people, they have certain rules and regulations that before evening, okay, before getting dark, they should put up their fire. Okay, they should put up their fire, and when it is curfew bell, all the people will come to the village and they want to take a rest. So when the curfew bell ringed, then all the people of the villages, they went to their home, and now the poet is watching to the grave. Okay, the poet is watching to the grave. The poet is watching to the cemetery, and there is a atmosphere is very dangerous. Some beetles, they are flight of the beetles, their sound, their droning sound, and especially in the night time, owl also, it is also hooting. That's not a good sound. When we hear the sound of owl, it is not a good sound. And there is another sound, that is sheep bell, and sheep bell also tinkling of sheep bells. All the sounds are not, these are not good, especially in the night time. That was something fearful time. That was something very, a very dangerous time. But the poet is not going to his home. The poet is not going to his resting place. He is standing outside of the churchyard, and he is looking very, very, that ambitious way, and he's looking that very fixed on his eyes to the grave, that he is thinking about the village people. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कर्फ्यू बेल लग जाता है, ठीक है, कर्फ्यू बेल का हो तो चर्च में एक बेल होता है, जो बेल सुबह बजता है, दोपहर को बजता है और शाम को बजता है। सुबह सुबह जो बजता है तो लोग जगते हैं, फिर अपने आप को तैयार करते हैं, काम पे चले जाते हैं। 12 बजे बजता है तो उसी के चलते हुए क्या होता है, थोड़े समय लोगों के लिए रेस्ट का समय होता है। फिर शाम को 6 बजे के समथिंग बेल बजता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे काम से वापस अपने घरों पे आ जाते हैं। जिससे वो वापस आते हैं, उसके बाद उनको रेस्ट करने का एक टाइम होता है। तो कर्फ्यू बेल जैसे लगता है, उससे पहले लोग खाना वाना बना देते हैं, और उनका जो चूल्हा है उसी समय ही बंद हो जाता है, उसी समय उसको बुझाया जाता है। तो लोग जब सभी चले जाते हैं तो उसी ऐसे एक टाइम पर अब जो ग्रेव में, यानी जो शमशान में, अब कभी क्या कर रहा है, वहाँ पर खड़ा होकर जो कैथेड्रल यानी चर्च के पीछे की तरफ जो कब्रिस्तान है, जो लोगों का बहुत बड़े बड़े ट्यूब्स है ना, उसको वो देख रहे हैं। और हालांकि वो समय के साथ बहुत खतरनाक समय था, रात
के समय था। रात में पेटल्स की आवाज़ आती है, रात में जो शिप्स होते हैं उनका भी बैलिंग का आवाज़ होती है, रात में जो उल्लू होता है उसका हुटिंग आवाज़ होता है। ये सभी जो आवाज़ है जो है ना, ये अच्छा नहीं है और ये डरावना है। लेकिन फिर भी कभी क्या करता है, अपने घर में नहीं जाता है बल्कि वहाँ पे इंतजार करता है, वहाँ पे देखता है उस कब्रिस्तान को और देख देख करके वो सोचता है उन लोगों के बारे में जो लोग मर चुके हैं और जो लोग दफनाए जा चुके हैं। The poet is still standing in the churchyard. He is thinking about the poor villagers who are buried in grave outside the church. Their graves look like the heap of sand. The poor villagers who are lying under these graves will remain there forever. The fresh and the fragrant breeze which call men to wake up, the chirping of a swallowing, the thrill call of the cock, and even the horn of the hunters cannot arouse them from their eternal sleep. No housewife will wait for their return. No child will run to climb upon their knees to get the first kiss of affection. The poet says that when they were alive, they worked very hard in their fields. They plucked the land drove option or horse and cut down trees with the heavy strokes of their axes. So here the poet observed to the people, those who have died and those who are buried. Now he is thinking about the poor villagers and he is thinking about the humble villagers, those who are buried in the grave outside of the church. Okay, so their grave look like a heap. Okay, that is a heap of sand, and the poor villagers were lying under the heap of the sand. Then also he says they were very eager and they were working very hard. They slept. Now no fragrance can make them wake up. No sound cannot make them to wake up, and nothing is there. If there is a tripping of swallows, if there is a call of cock, even there is a horn of hunters, all are failed. They cannot wake up to them because they have slept for long time and forever. Once upon a time, they were very enthusiastic. Once upon a time, they were very hard worker. Once upon a time, they were very, that whatever they can do or whatever they're supposed to do, they have done that. No one is waiting. There is no need waiting the woman for his husband. There is no, it is meaningless the child who should wait and to embrace his father and get the first kiss or get the affectional kiss. Now it will not possible. Why? Because they are under the grave. तो पॉइंट यहाँ पे उस बेचारे गरीब लोगों के बारे में, उस नम्र लोगों के बारे में यहाँ पे वो सोचता है और सोचते सोचते ये सोचता है ये लोग जब जिंदा थे तभी उन्होंने कितना मेहनत किया था, ये लोग जिंदा थे तभी उन्होंने कितना काम किया था, लेकिन आज ग्रेव के अंदर वो सिमट गए। उनके ग्रेव को देखो तो जैसे मान लो कोई एक जो रेत का जो टीला कहते हैं, है ना, एक हिप ऑफ सैंड की तरह दिखता है। बेचारे लोग अब क्या हो चुके हैं, अब मतलब शांत हो चुके हैं और ग्रेव के अंदर जा चुके हैं।
अभी जरूरी नहीं है महिलाओं को अपने पति का इंतजार करने का। अभी जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है और दौड़ता हुआ जाएगा और जाकर के अपने जो मतलब फादर को गले लगाएगा, उससे प्यार भरा एक चुम्मा को लेगा। अब ये सभी नहीं होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे और एक बात कहता है कि जब वो लोग थे जिंदा, तब उन्होंने बहुत मेहनत किया है, खेतों में काम किया है, किसानों का काम किया है, गांव में काम किया है, बहुत सारा मेहनत उन्होंने किया है। तो बड़े बड़े पेड़ों को उन्होंने काटा है ना, और साथ ही साथ बड़े बड़े खेतों में उन्होंने हल चलाया है ना, ऑक्शन को ड्रॉप किया है, हॉर्स को मतलब हॉर्स ऑक्शन ये सभी को उन्होंने इस्तेमाल करके बहुत से काम किया है, बड़े बड़े पेड़ों को काटा है, ये सभी काम उन्होंने किया है। लेकिन आज क्या स्थिति है, उनके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, उनके बारे में मतलब सराहना करने वाला कोई नहीं है। बेचारे वो क्या हो गए, वो मिट्टी के अंदर दब करके रह गए। द पोएट wants the rich and the ambitious people of the cities to recognize their useless service of humanity. They are the person who set their perspiration in the fields and grew variety of corn to feed the urban population. So no one should dare to make fun of the simple employment and the delights of these villagers. No one should laugh at their unknown and uneventful lives. So here, poet says to the rich people and those who are already recognized people, he says that those who are ambitious people, those who are living in city, he says they should respond to the set their perspiration in the field and grow variety of crops. कम से कम उनको याद तो करें, at least they should remember them, how they worked hard, and because of their hard work only, the ambitious and rich people, they made a lot of money, and they used to produce the corn, and they used to produce the wheat, they used to produce the rice, they used to produce different kind of things. And that thing, the businessman, the merchant, they used to sell and purchase. And because of that reason, they become rich. They should remember about them. That the poet here asks to the respected and rich and also honorable person. So, the poet here he says, we should not mock to them. गंवारा कहकर के हम उसको कभी भी तुच्छ नहीं समझे। और यही कहता है कि हमें तुच्छ नहीं समझना है उनको, हमें उनके खिलाफ इस प्रकार का कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत किया, उनकी मेहनत की बदौलत से ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। वो अगर उन दिनों में हमको बहुत मेहनत करके अनाज नहीं देते होते तो शायद आज हमारे लिए ये सौभाग्य नहीं होता कि हम कुछ अच्छे भली वस्तु को भोजन करते। इसीलिए उनको सराहना करें, उनको प्रशंसा करें, बल्कि उसका मजाक नहीं उड़ाए। सो यही पॉइंट हमें यहाँ पर कहता है। मोर एवर द सिटी dwellers and sophisticated people must realize that the end of every life, however powerful or glorious it may be, is death. There is no difference between rich and poor, high and low, known and obscure, great and small. In the eye of death, okay, those people are living in the city. They should remember that, they should know that death have no class, creed and
caste. It may not see that he is a rich man. It may not see that he is the king. It may not see he is the royal he is the royal belonging, and it may not think about he may be poor, he may be rich, he may be great person, he may be small person, but it occur to everybody. It occur to everybody. बट यहाँ पे कहता है मृत्यु जो है अमीर को नहीं पहचानता, गरीब को नहीं पहचानता, किसी को नहीं पहचानता, वो सबके लिए बराबर होता है. दैट मीन्स देयर विल बी डे वी विल ऑल्सो डाई एंड वी विल ऑल्सो बरी. उसका मतलब ये हुआ कि एक दिन आएगा, उस दिन हम भी क्या हो जाएंगे, जन्म लेंगे और हम भी मर जाएंगे और इसी प्रकार मिट्टी में दफनाए जाएंगे. तो इसलिए गरीब लोगों को कभी क्या नहीं करना, मजाक तो नहीं उड़ाना. In fact, death is the end of every man who is born. It is true. If there is birth, there is death. There is no doubt. अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है. जीवन में ये एक अखंड सत्य है कि मृत्यु सबके जीवन में है. यदि कोई जन्म हुआ है तो डेफिनेटली उसके लिए मृत्यु है. A man who is born must die one day, so no one had any right to mock at the life of an innocent villagers. मृत्यु सबके लिए हो सकता है. The death will be acute for all person. No one can escape from the death. Okay, no one can escape from the death. So that it is not good to mock to the ordinary people. It is not good to the mock to the common people or to the humble people, especially those who are staying in the village. तो पॉइंट हमको यही कहता है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगा, सबके लिए आएगा. तो इसीलिए एक दिन आएगा हम भी मृत्यु को महसूस करेंगे. एक दिन आएगा हमारे भी मृत्यु हो जाएगा. इसीलिए कभी भी ये सामान्य जो ग्रामीण लोग हैं उनको कभी भी क्या नहीं करना, खट्टों में नहीं उड़ाना. ये जो इनोसेंट विलेजर्स है इनको कभी भी खट्टों में नहीं उड़ाना. द पॉइंट फर्दर सेज that these villagers might have great talent. Many of them were genius enough to become great poet like Milton, or they could have raised a mighty army like Napoleon. Developed their ability, they were forced to lead a humble and a simple life in the peaceful and solitary atmosphere of the village, away from the stiff and struggle of city life. Some of them might be like great poet Milton, or some of them might be a great warrior like Napoleon. They had such talent, but they had no opportunity to show their talent and to show their quality. ये जिस ग्रामीण लोग इस कब्रिस्तान में, इस ग्रेव में दबे हुए, मिट्टी में छुपे हुए, इन लोग के पास भी, इनमें से भी कोई हो सकता था जॉन मिल्टन की तरह कवि, इनमें से भी कोई हो सकता था पावरफुल योद्धा जो नेपोलियन, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया. सारे मौका जो है कुछ विशेष लोगों को मिल पाया, उनको कोई मौका नहीं मिल पाया. इसी के चलते क्या हुआ कि और उन्होंने अपनी प्रतिभा को कभी दिखा नहीं पाया. तो इसीलिए उनको क्या नहीं करना, उनको कभी भी, आप जो सिटी में रहते हो, आप जो शिक्षित परिवार में रहते हो, और आप कभी भी उनको क्या नहीं करना, उनको कभी भी निंदा या उनको कभी भी मजाक नहीं उड़ाना. तो नो टॉपिक्स ऑफ मेमोरियल्स आर रेज्ड इन द मेमोरी
of these rustic villages, yet imperfect verses are engraved in their tombs. Their death they wanted to remember by their friends and relatives, like always and wealthy person. They too had a longing that their name should not be forgotten after their death. Gray also described the epitaphs written in the humble tone of the poor peasants. These epitaphs are neither very long nor impressive, only their names and years of their birth and death are mentioned. These modest things to have been written by the unskilled hand of the uneducated village poet. So here यहाँ पे वो यही कहना चाहते हैं कि उनको कौन याद रखेगा, उनको कौन मेमोरी में रखेगा। बस उनके जो कब्रिस्तान है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि वो कब मतलब जन्म हुए, कब मरे, उसके अलावा और कुछ बातें उनका और नहीं लिखा गया। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन इनको कोई भी नहीं पूछता, और ये बात को लेकर के वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं कि वो यही कहना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं कि उनको जरूर क्या करना चाहिए, उनको जरूर रिमेंबर करना चाहिए, उनको जरूर यादों में बसाना चाहिए, और साथ ही साथ उनके नेम को और उनके समय को कभी मतलब वो भूल नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, आपको कई तरह म्यूजियम में जाओ, उसमें सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए होते हैं, ये कब जिंदा हुआ, कब मरा, है ना, और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, ये सब के बारे में होता है। लेकिन किसी गरीब के बारे में ये सब होना मुमकिन नहीं हो पाता, खास करके जो ग्रामीण होते हैं उनके लिए ये सभी नहीं हो पाता है। In the end of the poet feels, someone may say that the writer of these lines would get no honor in his life. तो इसमें ये कहते हैं, जो यहाँ पे जो मतलब किसी ने उनका जन्म को लिख दिया और मृत्यु के समय को लिख दिया, तो वो भी एक साधारण गांव वाला ही है, लेकिन उस गांव वालों को कोई याद नहीं करता है। ओके, उस गांव वालों को कोई याद नहीं करता है। अगर उसकी जगह पर शहरी वालों को याद करके लिखा होता तो कितने सराहना उसको करते और कितने उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। He could be seen wandering on the upland lawn to reach the churchyard. He used to stretch out his body at the foot of the beech tree and watched the soft murmuring brook. It was seen sometimes smiling and sometimes sad, but one morning he was found neither on the hill nor beside the brook was dead. His dead body was carried in the procession through the path leading in the church. The epitaph engraved in his grave says that the poet lived in obscurity. He had a melancholy disposition. He was favored by the goddess of learning. He had a sincere and liberal soul, and he gained a friend in a God himself. तो यहाँ पे पोएट के बारे में कहा जाता है कि ये इसी प्रकार जो सामान्य लोगों के बारे में सोचता है, सामान्य लोगों के बारे में विचार करता है, और इसीलिए वो क्या हो जाता है कि ईश्वर का एक दोस्त बन जाता है।
ये ईश्वर का एक दोस्त बन जाता है. Nobody should examine his merits and demerits. He has offered his virtual voice in God. तो इसी के साथ कविता के अंत में कवि कहता है कि शायद कोई व्यक्ति ये कहे कि इन व्यक्तियों के रचयिता को अपने जीवन में व्याप्ति प्राप्त नहीं होगी. उसे चर्चयार्ड पर जाने के लिए ऊपर चढ़ने देखा जा सकता था. वो एक बीज का वृक्ष के नीचे अपना बदन फैलाकर लेट आया कहता था और बहते हुए झरनों को देखा करता था. परंतु एक सुबह उसने तो पहाड़ पर और ना ही झरने पर देखा था. It was a time when he was watching to the brook, he was watching to the river, he was watching to the nature. But there was a day when he was not watching or he was not doing anything else because he has died. So that poet here says, it is our responsibility to remember them. It is our responsibility to proclaim their good deeds and to propagate their good works, because everybody has different talents and everybody has different qualities. So if we know quality, just I'm a teacher, I'm teaching, that's my quality. You are the student, you are studying, and you might have different qualities. It doesn't mean that I am always higher rather than you. Okay? Sometimes you might have great quality rather than me. But you know what happens there? Oh, he's a student. That is why some people are ignoring. But if a small deed is done by the teacher, the people will, praised, admire him, and they would say this is good deed. So this kind of things are happening in this world. That is why Gray is getting very sad. And in such time, he was thinking about his friend also. So students, this video was really very long, but I hope you have understood. You have to wait for the next video. That would be for the critical analysis or the chapter analysis. Thank you. May the God bless you. Once again I tell you, yet if you haven't subscribed my channel, please subscribe and press on bell icon. Thank you. May God bless you.